हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल बी कवरिंग यूनिट 3 का सेकंड पार्ट, ग्रीन गवर्नेंस, द कॉन्सेप्ट and initiatives that have been undertaken by the government of India. We'll be covering this in an answer sheet format, as in like a question answer format that you can directly target for any answer you come across from Unit 3. Just two questions from Unit 3, and that will cover entirely everything in Unit 3. And you can directly, write these answers as it is in exams. That's my surety. So, in the 21st century, environmental degradation, climate change, biodiversity loss, and resource depletion have compelled states to rethink the traditional governance models. So, you need to remember these things: environmental degradation, change, biodiversity loss, resource depletion, and these have, compelled the traditional, the long, जो पुराने ज़माने से चले आ रहे थे मॉडल्स, उन्हें रीथिंक करने के लिए these problems, make us do. Economic growth without ecological balance have proved unstable. So, growth without balance is, unsustainable. We have covered this in Unit 3 ka first part. This context, green governance has emerged as a normative and practical framework that integrates environmental sustainability into decision making, policy formulation, and institutional function. So, green governance has emerged as a normative and practical framework जो इंटीग्रेट करती है environmental sustainability को डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग में. So these are the keywords, okay? These green governance. Introduction should be very strong. एक कोर बता देना चाहिए जो भी आंसर आप फॉलो अप करने वाले हैं, कैसे जो प्रॉब्लम्स थी, किन प्रॉब्लम्स की वजह से गवर्नमेंट को अंडरटेक करने पड़े स्टेप. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, रिसोर्स डिप्लीशन हो गया, ठीक है. और इन्होंने क्या, जो ट्रेडिशनल गवर्नेंट के मॉडल थे, अभी तक गवर्नेंस इस हिसाब से हो रही थी, वो क्यों हमें वापस रीशेप करनी पड़ी, क्यों इनिशिएटिव्स लाने पड़े. क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही थी उन मेथड से भी, बट एक इकोलॉजिकल बैलेंस था वो डिसरप्ट हो गया था. बहुत सारा फॉरेस्ट चले गए थे इंडिया के. इन रीजंस की वजह से हमें रीथिंक करना पड़ा. ग्रीन गवर्नेंस को एक प्रैक्टिकल फ्रेम बना गया है जो इंटीग्रेट करता है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को हमारी डिसीजन मेकिंग में. जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट हो रही है वो सब इन इसको ध्यान रखते हुए कैसे एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हमारा रहे, ठीक है. जो भी इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग्स हो रही हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, इनफैक्ट जुडिशरी तक डिसीजन अपनी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेकर ले रहा है. इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री विद इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी has adopted multiple green governance initiatives, though not without contradictions and challenges. Okay. Now, what does green governance mean? A system of governance that integrates environmental protection, sustainable resource use, climate responsibility, as well as the ecological justice into political, economic, and administrative decision making. Political, economic और administrative, ये अगर मैं बताऊँ, इन तीनों को कौन ज्वाइन कर रहा है? Green governance, right? Green governance is the one that integrates the political, the economic, as well as the administrative decision making. कैसे green governance integrate कर रहा है? It talks about environmental protection, the sustainable resource use, as well as the climate responsibility and the ecological justice. Okay. Now, I थॉट कि तुम्हें याद रखने के लिए ग्रीन पॉलिसीज अडॉप्ट हो रही हैं, इन्वायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी हो रही है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी हो रही है, नेचर सेंटर्ड डेवलपमेंट हो रही है. सो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर विद दिस कोड वर्ड. बस मैंने आर से मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी, तो आई रिमूव्ड इट. ग्रीन पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, नेचर सेंटर्ड डेवलपमेंट, राइट. व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ग्रीन गवर्नेंस? नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबली डेवलपमेंट जो है वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल ग्रोथ को हैंड इन हैंड लेके चलना, दैट इज ग्रीन गवर्नेंस. व्हाट इट इज अबाउट इंटर जनरेशनल इक्विटी, कि एक जनरेशन से
दूसरी जनरेशन पे चीज़ें पास ऑन होती रहे. इंटर जनरेशनल इक्विटी. इक्विटी स्टैंड्स फॉर इक्वल, ओके, शेयर. तो बेसिकली एक उससे ये दूसरे स्टेप डाउन जैसे हम हो रहे हैं दूसरी जनरेशन में, ये मेंटेन रहे. तो सेकंड वन इज इंटर जनरेशनल इक्विटी. थर्ड इज पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग. Everyone participates. It's not just government's role. We are all saying that AQI will come karo in Delhi ka, but what are we doing as citizens? What is our civic sense? We are smoking in public. We are spreading this passive smoking as that's more harmful. We know this fact. Still, we are not participating in it. So there should be a participatory decision making. Environmental rule of law. Okay, so there should be a rule of law that's environment friendly, right? Precautionary principle, you know, rather than reactive measures, कि कुछ होने के बाद एक वे बढ़ने के बाद जैसे आई टोल्ड मेजर लेना, उससे अच्छा प्रिकॉशनरी rather than, you know, precaution is better than cure. That's the thing. Precautionary principle we should adopt. Polluter pays the principle. ओके, नाउ ऑब्वियसली व्हाई शुड एवरीवन सफ़र व्हेन, अगर मैं कुछ व्हीकल से ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, आई एम अबाइडिंग बाय ऑल द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, आई एम यूजिंग द पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आई एम फॉलोइंग एवरी सिंगल लॉ, but I am still paying the price. So who should pay the price? The polluter should pay the price and not the normal citizens, right? Now, theoretical foundation. Now, this is a very scoring part also. Brundtland Commission, 1987, defined sustainable development as development that meets the need of present. Very important thing. Now, the second, without compromising the ability of future generations. Development isn't the one that meets the need of present. The condition is via not compromising the ability of future generations. The same development should help future generations to generate income. It should not be a downfall slope, it should be an uprising slope, right? Are you getting this simple fact? So, this definition should be written definitely. Don't forget this one. That meets the need of the present without compromising the ability of future generations, right? दिस फॉर्म्स द मॉरल कोड ऑफ ग्रीन गवर्नेंस. ग्रीन गवर्नेंस ऐसे नहीं है कि आज के लिए तो वोट लेने के लिए बढ़िया कर लो, कल के दिन जो होगा देखा जाएगा. इट्स नॉट दैट. तो द मॉरल कोर ऑफ ग्रीन गवर्नेंस इज व्हाट इज द नीड. पीपल आर लाइक क्यों नाउ. तो सो सॉरी. So, what is the need of green governance? No, people will say कि green governance इंडिया में पहले तो ज़रूरत नहीं थी, अब अचानक से क्यों ला रहा है? The high population pressure. Obviously, the high population pressure is something, you know, that is challenging everyone till late. Even the rapid industrialization. Okay, I'm sorry if the disturbance is caused. I'll repeat anything if you missed. So, what is the need for green governance? The high population pressure. जो इंडिया की पॉपुलेशन वो इतनी बढ़ रही है कि वी नीड इट. इट्स अ नेसेसिटी दीज डेज. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. You know, people are setting up factories without any chimneys, you know, smoke chimneys. There's a filter that can clean the smoke, but people are not using it. So, rapid industrialization without any preventive measures, climate vulnerability, floods, heat waves, these are affecting. So, floods and heat waves, you know, climate का एक पैटर्न होता है कि जैसे पहले होता था कि जनवरी सबसे कोल्डेस्ट होगा, दिसंबर सबसे कोल्डेस्ट होगा. यू नो दैट टेम्परेचर हैज़ बीन फ्लक्चुएटेड बाय ह्यूमन इंसिडेंट्स. This becomes the cause of climate vulnerability. Sometimes there are floods, sometimes there are heat waves. We don't know how to react. Sorry. Severe air and water pollution. The severe air and water pollution is one of the major causes. Delhi is affected so badly. Forest and biodiversity loss. One of the major reasons. We are extracting timber from forests. We are extracting many such, you know, core items we are extracting. But, you know, no, you know, there's no substitute. If we are taking up something from one tree, Japan has a policy to plant another 5 to 10 trees for one tree, because one tree will take time to grow, right? But here we cut thousands of trees.
with no substitute, no precautionary measure to दूर गया, there's no reactionary measure as well. So there's loss of biodiversity, forest, urban ecological stress. Obviously, the metropolitan cities have very stressed life. What are the major initiatives? Now, here comes the core of the answer. Pay attention, okay? Any doubts, you can comment, but pay attention. Constitutional and legal framework. Constitutional provisions. Article 48A. Protection of environment and forests. You know, this constitution that allows only human beings rights, it's not that. Even nature is protected by constitution now with the help of Article 48 clause. Again, there's no clause, sorry. 51 AG, a fundamental duty of citizens. No, it's not just, uh, in the fundamental rights. We all demand for the fundamental rights, but fundamental duties maybe there's something added for environment, that is to protect environment. Now, the thing is, these things are given, प्रोटेक्शन तो दे दी, लेकिन अभी भी नॉन जस्टिशिएबल जो नेचर है, डीपीएसपी, आई नो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दीज आर नॉन जस्टिशिएबल. मतलब इनके अगेंस्ट तुम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो अगर कोई वायलेट कर रहा है. तो वही बात है ना कि एक हाथ में तो तुमने प्रोटेक्शन दे दी, बट अगर कोई उसको वायलेट कर रहा है और उसका अपील नहीं कर सकते तो व्हाट्स द यूज, राइट? आई थिंक आप लोगों ने ये एईसी में कवर किया हुआ है, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये एक्ट्स जो हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, एयर एंड वाटर एक्ट्स, ये इन्वायरमेंटल एक्ट्स अमेंडमेंट सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन को जो चेंज करता है, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं है ये एक्ट्स. डोंट राइट इट, आई एम राइटिंग एंड कैंसिलिंग इट आउट. This is not under amendment of constitution. These are the acts that have been formulated, to protect environment, right? These have strong legal base, but they can't be implied or compliance. Enforcement नहीं है इनका. Institutional mechanisms भी हुए हैं, NGT. I remember this was one of the full forms in AEC. मेरे को ये बहुत सारा सब्जेक्ट जो है तुम्हारा EVS जो होता है AEC का, NEP kids, you know it better, right? तो NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अंडर एक फुल फॉर्म आई थी. ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एक फ्रेमवर्क हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ है ये 2010 में. इट्स लाइक अ फास्ट ट्रैक इन्वायरमेंटल जस्टिस सिस्टम. बहुत बहुत टाइम लगता है इंडियन जुडिशरी को, तो दिस इज अ सिस्टम जो जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट सुना होगा. सिमिलरली दिस इज फॉर इन्वायरमेंटल जस्टिस की तुमने सुना कि अरावली हिल्स हो रहे हैं, सो यू कैन अपील हियर, राइट? अप्लाइज polluter pays and precautionary principles. थोड़ा थोड़ा लिखोगे एग्जाम में, इट विल गिव अ इम्प्रेशन. ये है बेसिकली नेचर गेट्स अ ट्रिब्यूनल एज इन the nature gets a court here, right? So a code for you to remember. Policy initiatives. National Action Plan on Climate Change, full form NAPCC. It's basically, it works on many things. Solar mission, water mission, green India, sustainable habitat are like the 4 core parts of it. So 8 national level missions पे काम कर रहा है. यू ऑलरेडी हैव हर्ड कि सोलर पावर प्लांट ने कितना हेल्प किया है इंडिया का, कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रही है. इट्स मोर होलिस्टिक अप्रोच ऑब्वियसली, बट स्टेट के लॉज अलग होते हैं, सेंटर के लॉज अलग होते हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ डिसहार्मनी बिटवीन द टू. आई विल से very important. Why? Because it's an international level agreement, nationally determined contributions under Paris Agreement, reduce emission intensity, increase renewable energy share. ठीक है, give it a read. There's an article also on it. You can read it after your exams. I will pin the link for you, or you can ask me in the comment section if you want to. NDC क्या होते हैं?
they are aimed for reducing emission intensity. I hope you understand emission. By emission I mean the carbon emissions that is caused, and जो renewable energy का शेयर है उसको इंक्रीज करा जाता है. तो बेसिकली ग्लोबली स्केल पे मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि ये ग्लोबली मेजर टेक प्लेस किया है इन्वायरमेंट के लिए, राइट. तो पॉलिटिकली तो बहुत होते रहता है. Market based green initiatives. We told solar parks are there, wind energy corridors, green hydrogen mission, reduced carbon footprint basically. But another problem, land acquisition के charges हैं कि ये गवर्नमेंट का लैंड है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो लैंड है वो एक्वायर हुआ हुआ है. तो here is the conflict. ESG and green finance. Green bonds, corporate sustainability reporting. It's like a private sector participation. ठीक है? It's like the risk of greenwashing. ये इतना important नहीं है. You can leave it also. You can just write कि ESG और green finance के अंदर green bonds हुए हैं और corporate भी help करने लगे हैं. Civil society. Many NGOs are there in India that support it. Public interest litigations, PILs. ठीक है? Local movements, Chipko legacy, the Chipko movement that took place in Uttarakhand, grassroots democracy. ठीक है. Often people are like कि international level पे करेंगे, state level पे करेंगे, but एक grassroots level के लिए NGOs are like wonders, right? Now you should write it environmental problem. इसको लीनियर फॉर्म में लिखना. In the center of your page, right? Don't write flowchart, right? Just environmental problem, green policy formulation. That policy should have legal and institutional support, civil society participation, sustainable development. This will give a good impression. Okay. Now let's talk about some critical perspectives. Amartya Sen has capabilities approach. Development must expand human freedoms, not ecological destruction. आई थिंक अमर्त्य सेन सेमेस्टर्स थर्ड या फोर्थ में भी अपने क्रिटिक्स की बुक में पढ़े होंगे. इफ़ यू हैव रेड दैट डेप्थ, with that depth and profoundness in your subject. If not, read it here. अमर्त्य सेन ने एक उनकी बुक है कैपेबिलिटीज अप्रोच की बात करता है कि डेवलपमेंट ह्यूमन फ्रीडम को एक्सपैंड करना चाहिए, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को नहीं. दैट्स अ वेरी डीप कोट, बहुत अच्छा मीनिंग है कि ह्यूमन फ्रीडम की कॉस्ट पे, सॉरी, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की कॉस्ट पे ह्यूमन फ्रीडम को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए. बेसिकली जो इकोलॉजिकली इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है हमारा, उसको हमें रोक के ह्यूमन फ्रीडम की ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए. ग्रीन गवर्नेंस फेल्स इफ, तो ऑब्वियसली अगर हम सोशल जस्टिस के बारे में बात नहीं करेंगे तो ग्रीन गवर्नेंस विल फेल. She's also like a ecofeminism. Corporate-led green policies often destroy indigenous ecology. Obviously, corporate wants to extract more profit. So, उनकी जो green policies हैं, these are often targeted for meeting profits rather than preserving the ecology. So yeah, it's very true. It often destroys the indigenous ecology. Green governance in India is sometimes elite centric. ओके, इट्स लाइक गुड फॉर द रिच कि अंबानी को अडानी को तुम फॉरेस्ट बेच रहे हो जो आजकल चल रहा है. तो इट्स एलीट सेंट्रिक. उल्रिक बेक, मॉडर्न गवर्नेंस क्रिएट्स एनवायरमेंटल रिस्क इट कैन नॉट कंट्रोल. ठीक है. तो मॉडर्न गवर्नेंस कई बार एनवायरमेंटल रिस्क ऐसे कर देता है क्रिएट जो इवन वी कांट कंट्रोल. इंडियन गवर्नेंस इज रिएक्टिव नॉट प्रिवेंटिव. आई एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल प्रीवियस वीडियो में. States must act as ecological trustees, not market facilitators. States को ecological trustees की तरह act करना चाहिए, not like market facilitator कि market के according चल रहे हैं. Indian states should prioritize growth over ecology. Major challenges क्या हैं? Weak enforcement, Indian government always weak enforcement, center-state coordination issues, conflict between development and ecology, bureaucratic delays, marginalization of local voices. एक फाइल दूसरे दफ्तर वही चर्चा चल रही है, लोकल वॉइसेस को मार्जिनलाइज किया जा रहा है.
सो इज इट सक्सेस और फेलियर? स्ट्रॉन्ग लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बेस मिल चुका है, ग्रोइंग क्लाइमेट लीडरशिप मिल रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म मिल रहा है, बट फेलियर क्या है? इम्प्लीमेंटेशन का गैप है। रूल्स तो आपने बना दिया बट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा? पॉलिसी प्रैक्टिस डिस्कनेक्ट। पॉलिसी कुछ और है, प्रैक्टिस में कुछ और है। डेवलपमेंटल बायस है, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो इकोलॉजी हैम्पर हो रही है। जल्दी रोड्स बनानी है तो पेड़ तो कटेंगे ही, you'll have to compromise on something or other. So developmental bias. Now strengthen local governments. Grassroots लेवल से शुरू करो, लोकल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करो, इंटीग्रेट एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। जब भी इकोनॉमी की प्लानिंग हो, इट शुड बी ऑलवेज एनवायरमेंट ओरिएंटेड। प्रमोट इको फेडरलिज्म, एनहांस पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक का पार्टिसिपेशन जहाँ होगा वहाँ अगर रोड भी बन रही है तो ऐसा नहीं है, पब्लिक शुड कोऑर्डिनेट कि एक घर अगर जा रहा है तो पब्लिक शुड ट्राई कि थोड़ा सा हम इन्वायरमेंट की टूवर्ड्स भी सोचें, ठीक है। सो पब्लिक पार्टिसिपेशन, इन्वेस्ट इन ग्रीन टेक्नोलॉजी। We are always thinking about the cheap methods, right, rather than the sustainable ones. So green technology should be promoted. Balance growth and sustainability. Now growth should always meet with sustainability. The conclusion is green governance in India. It represents a promising yet paradoxical journey. While the state has developed progressive laws, institutions, and policies, their effectiveness is undermined by implementation failures, market dominance, and developmental pressures. तो स्टेट ने डेवलप करने हैं प्रोग्रेसिव लॉज, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज़, जो इनकी इफ़ेक्टिवनेस है वो इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ही डिफाइन होगी, और वो इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ फेलियर. Market is still dominating. There is always a pressure on the government to develop at the cost of environment, obviously. True green governance requires moving beyond symbolic environmentalism towards ecologically responsible, socially just, and participatory governance. No, it should not be a symbol. It should be socially just. ठीक है, beyond this, fake दिखावा वाली symbolic environmentalism, and everyone should participate. So sustainable India is not a policy option, it's not an option, it is civil sational necessity. As it is a very required statement for a good future. It's a necessity. Okay, for a civilized India, for a civil sational, it's a very huge term, break it down. Okay, it is not an option, basically it is a necessity. So I think that covers your unit 3 completely. For any doubts, let me know in the comments. Thank you so much.